all of you on my YouTube channel once again. फ्रेंड्स, अगर जो आपसे कोई टीचर या कोई एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप देखकर इसे हड़बड़ाना नहीं है। जब भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब भी कोई ये बिग ब्रैकेट के अंदर कुछ आता है तो इसके हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 0 to कोई भी पावर रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, ये 4 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं वो इस फॉर्मेट में है। और 2 more क्वेश्चंस आई हैव 5 and 6। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में फ्रैक्शनल फंक्शन के ऊपर आधारित है। पहला 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और ये दोनों हो गए फ्रैक्शनल फंक्शन। जब भी इस टाइप से आए कोई फंक्शन, इस टाइप से अंडर इन मिडिल ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, जब भी इन मिडिल ब्रैकेट में अगर जो x आए मतलब इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। और इंटीग्रेशन जब भी रहे 0 to कोई भी नंबर, लेट इट बी एनीथिंग, I can take let us say 100 I would take. So whenever this type of questions are come, don't get afraid just by seeing the question paper, because the answers are very simple. You would have not studied in your school time. In NCERT these kinds of things are not given. ये सारी बातें NCERT में नहीं बताई रहती है, लेकिन जब आप कोई competition को face करते हो तो these kind of questions are only asked, and by seeing these questions in the examination, don't get clean bold. So today I am going to share a trick with you by which you will be able to find both the types of this greatest integer function and of fractional function in just 1 or 2 seconds only. You would not take more than this. Just in the blink of your eye you will get your answer. So let us move over to the short tricks which I am going to explain you. So here friends, I have started a new series of hashtag shortcut in which I have taken chapters of various types like which are asked in the examination, like JEE, National Defense Academy, Air Force, XY Group, Navy, CET, and many more entrance examinations. So if you are preparing or any of your friends are preparing, please suggest them this channel, because in this we will be covering all the chapters, and in each chapter I would give you around 8 to 9 shortcut, and from which questions are directly, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो ये हमारा इंटीग्रेशन का ट्रिक का ये हमारा लास्ट और 6th वीडियो है। अगर जो आपने पहला 5 video if you have not seen, please go and see, because this is our 6th shortcut. Please go and see in our YouTube videos section. So let us move over to the shortcut now. As I told you, we will have 2 types, one is GIF and one will be fractional function. You have seen here that GIF is represented as this, as I have mentioned here also. So यहाँ पे trick, what the trick says, let us see the trick. Trick says that whenever we have any GIF x to the dx and integration 0 to n, then answer is very simple. Answer is in front of you, right in front of your eye. Answer is simply n into n minus 1 by 2. For example, if in place of n, अगर n के जगह पे 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 बाई 2 से 10 कट जाएगा 5 times, so 5 9 जा 45 is your answer. See how simple it is taking. For this solution alone it is taking 2 seconds, but if you become master it is just 1 second. For example, if it is coming 100 here, let us say 100 it is coming in place of n, so you can just simply in your mind itself you can calculate 100 into 99 by, so it will come by 2, so our answer is 99 into 50. So for better understanding I would take some examples. Like first example I have taken as integration 0 to 10 GIF x. This is our first example. So here answer is simply 10. Here we have 10 in place of n, so we will write 10 into 9 by 2, so it will cut by 5 times, so 5 9 ja, we will have 45 as answer. Moving over to the next example, we have integration 0 to 25 greatest integer function x dx.
सो इन दिस केस यहाँ पे n के जगह पे 25 आया है। सो n के जगह पे अगर जो 25 आया तो हम भी उसी तरह फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25 इंटू 24/2, सो इट विल कट बाई 12 टाइम्स, सो 25 इंटू 12 वी विल गेट 300 एज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप you would have understood this trick, and please suggest this trick with your friends also about the greatest integer function, because this greatest integer function seems to be very difficult in the competitive examination. Students just they neglect the question, but now you will be able to solve this question in just 1 second. So now moving over to fractional function. अब हम fractional functional की ओर बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल फंक्शन में भी क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to n फ्रैक्शनल फंक्शन x dx। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो n रहेगा उसी का आप हाफ कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो हियर इट इज स्टिल simple as comparing to our previous one GIF. This FF fractional function is very simple. So for better understanding, I would take few examples. Like our first example is integration 0 to 10 fractional function x. So here what I told you that whatever is coming as 0 to here upper limit, you just divide the upper limit by 2. So if we are dividing 10 by 2, it will become 5 as our answer. Again in this case we are having 0 to 99. Here upper limit is coming as 99, so we will divide by 2, so we will get answer as 49.5. Another thing, एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए और कुछ अपर लिमिट कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए और यहाँ पे फ्रैक्शनल फंक्शन x होना चाहिए। इन प्रीवियस ट्रिक ऑल्सो द क्वेश्चन फॉर्मेट सेम होना चाहिए, 0 से कोई नेचुरल नंबर और greatest integer function dx, then only these tricks are applicable. So friends, I hope you would have enjoyed this session, you would have liked the videos which I have sorted out today. So as of now you will be able to solve all these 6 questions which I gave, 4 from this greatest integer function and 2 from the fractional function, these 2 from the fractional function. So you comment all these answers in the comment box, top comment को मैं पिन कर दूंगा और I will like all of your comments if you comment in the right way. So friends, please suggest this channel to all your friends जो कि कोई भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, because it is going to bring a kind of game changer फॉर देम। ये एक तरह के गेम चेंजर का साबित होने वाला है जो लोग इस कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटीग्रेशन एक पार्ट है। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।